So let us start the lecture. So we recall the theorem for countable sets here. So what's the theorem? This is the theorem for a criteria for a set to be a countable set. Okay. So the statement is, let B be a non-empty subset set. Okay, non-empty set, not subset. So it's a set. Be a non-empty set, then the following statements are equivalent. Then the following statements are equivalent. The first one is B is countable. And second is there is an injection. There is an injection from B to Z plus. There is an injection. Injection means 1 1. There is an injection F from B to Z plus set of positive integers. And third one is there is a surjection. There is a surjection G from Z plus to B. So this theorem is very important. Okay, so for us for countable sets. So then we have proved that Z plus cross Z plus is countable. So हमने इसके दो proofs discuss किए actually, Z plus cross Z plus की. तो यहाँ पर मैंने बताया था कि हम तो शायद उस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था. हमने मैप डिफाइन किया Z प्लस क्रॉस Z प्लस टू Z प्लस बाई f of n m is equal to 2 power n 3 power m. So we can replace these 2 and 3 by any two relatively positive integers. So we apply this theorem. We prove that the set of rational numbers is a countable set. Exercise: show that the set of positive rationals is a countable set of positive rationals Q plus. हम इसको डिनोट करेंगे Q plus. Q plus means set of positive rational numbers. Q plus is countable. तो इस थ्योरम के हिसाब से आप सिर्फ ये करोगे, प्रूव देयर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम Q प्लस टू Z प्लस. अगर आपने ये प्रूव किया ना Q प्लस से लेकर Z प्लस तक बाइजेक्शन होगी, देन दिस Q प्लस इज काउंटेबल. सॉल्यूशन. So first we define. So let's first use the result. We know that Z plus cross Z plus is countable. So there is a bijection from Z plus cross Z plus to Q plus. Okay, so not from Z plus cross Z plus to Z plus, because Z plus cross Z plus is a countable set. Countable set के लिए आपको bijection होगी from the set to Z plus. From the set to 1 minute. Is it from the Z plus to B आपको चेक करना है. Z plus से लेकर Z plus cross Z plus तक bijection है. Okay. So since Z plus cross Z plus is countable, therefore by above theorem, by
above theorem, there is a surjection, say let's take it F from Z plus to the set, which is here Z plus cross Z plus. Okay, now we define a map G from Z plus cross Z plus to set of positive rational numbers by any idea have you this how we define this map from Z plus cross Z plus cross Z plus means set of all ordered pairs with positive entries, positive integers. हाँ, कोई आइडिया है आपको कि हम what's the natural mapping from Z plus cross to Z plus cross Z plus to Q plus? Now you have to associate a rational number with each pair of integers. So that's very simple, because if you choose any rational number, you must have pair of integers. So how do we define this map then? Define this. G of okay, G of m comma n equal to m by n. Okay, right. So this is the natural way to define this map. Is this map surjection? ये surjection है यहाँ से यहाँ तक Z. It's a map from Z plus cross Z plus to Q plus. ये surjection है. Is it on to? Yes, sir. Okay, because if you choose any rational number, then any rational number is of this form m by n. So it's surjection. So let so this surjection then for any say let's take x in Q plus. X अगर Q plus में होगा, we have x is equal to m by n, where m n belongs to Z plus. Since x is a rational number, so it's of this form. But what's m by n? It is g of m. It's g of m. So for any rational number x, we have a pair of integers m n such that g of m n is equal to x. So therefore g is surjection. G is. तो आपके पास दो surjections है. One is f, which is from where to where? It's from so this f is from Z plus to Z plus cross Z plus. It's from Z plus to Z plus cross Z, and second is G, which is from Z plus cross Z plus to Q plus. So let's compose these two mappings. So it's G composition f. Then now this G composition f. It's from Z plus to Q plus. It's also surjection. Is also because composition of two surjection mappings is again surjection. Is a surjection. Is a surjection. So composition of surjection is again a surjection. That's very simple. This composition is it's closely with respect to the composition. As जैसे आपके पास दो मैपिंग सपोज है, आपके पास ये है f from a to b, ये भी surjection है. It means that f of a is equal to b. यही है ना इसका मतलब. surjection का मतलब image of set a is the whole b. और आपके पास दूसरी surjection है से b to c. तो इसका मतलब है कि g of b किसके बराबर है? c के बराबर. अब आपको कंपोज करना. कंपोज कैसे करना? So that this composition is well defined. So it's from a to b, then from b to c. So the composition is GF. Okay, GF is the composition. Is it surjection? आपको ये check. This composition is defined from A into B. So it's from A to C. Sorry, A to C है. This is from A to C. तो आपको चेक करना क्या ये surjection है this map. जी कंपोजिशन है. जी भी surjection है, F भी surjection. इनका composition आपको चेक करना. तो उसके लिए आपको देखना G composition F of A, image of the set A. ये अगर पूरा C आ जाए, then it's a surjection. By definition, this is called G of F of A. By the definition of the composition of mappings,
This is equal to G. What's f of A? F of A is whole B. And what's G of B? G of B is whole C. So the composition of surjection is again a surjection. So it means that we have a surjection here, G composition F from Z plus to Q plus. And now you apply this result जो हमने पहले state किया है, this result here. So whenever we have a surjection from Z plus to B, then B is countable. So here we have here Q plus. So we have surjection from Z plus to Q plus. It means that Q plus is countable. Is countable. So set of positive rationals is countable. Also this Q plus is not finite. Is not finite. This you can easily verify. It's not a finite set. So therefore Q plus जो है is countably infinite. Any countable set which is not finite is countably infinite. So Q plus is a countably infinite set of positive rationals. अब actually आपको प्रूव करना set of rational numbers is a countable set. What set of rational numbers? It's Q minus union Q plus. Q minus means set of negative rationals, Q plus means set of positive rationals, then union zero rational number. So this we have proved Q plus is countable. Then from this we can find this Q minus is also a countable set. So these two are countable sets, and 0 is also countable. So it's actually Q is the union of three countable sets. So in order to prove that Q is a countable set, we must prove that countable union of countable sets is again a countable. अगर हमने वो प्रूव किया, then this Q will be countable. हाँ, अब आप ये कहोगे कि Q माइनस कैसे काउंटेबल है, तो इसके लिए सिंपल है. आपके पास Q प्लस काउंटेबल है, Q plus is countable. You define a map from say Q plus to Q minus, okay, Q minus by f of m by n is equal to minus m by n. So this is obviously a bijection, this map Q plus to Q minus. Okay, you assign a rational number with its negative, okay, additive inverse. So this is a bijection. Also now you have proved that f is this Q plus is countably infinite. Q plus is countably, ये आपने प्रूव किया Q plus countably infinite है. So that means we have a bijection from Z plus to Q plus by definition. Countably infinite set की definition क्या है? If there is a bijection from Z plus to Q plus, so from Z plus to the set, तब जाके वो set countably infinite होता है. तो Q plus है countably infinite. It means that we have a bijection from Z plus to Q plus. Now let's compose these two. G, F composition G. It will be a bijection from Z plus to Q, because G is from Z plus to Q plus and F is from Q plus to Q minus. Sorry, it's Q minus here. So that means we have a bijection from Z plus to Q minus. So which gives that Q minus is countably infinite. So Q plus भी countably infinite है, Q minus भी countably infinite है. So that means both are actually countable sets, and 0 is also a countable set. It's a finite set, and it's the union of this Q, the set of rationals. It is the union of three countable sets. So we prove we prove a theorem that countable union of countable sets is again a countable set, and from this we conclude that set of rationals is a countable set. So let's prove the theorem. Let us first state it. Countable union of countable sets is countable. A countable union of countable sets is a countable set. Is a countable set. So proof. So you have to take the countable family of countable sets. मतलब जो फैमिली है ना, उसका जो इंडेक्स सेट है वो भी काउंटेबल है. दैट सेट इज अ काउंटेबल सेट, इंडेक्सड सेट. ओके, सो लेट्स टेक दिस. let a n where n is in G.
n is not a natural number. Okay, so n belongs to j. This j is a countable because you have to take the countable family of countable sets. This family should be countable, and in this family each set is countable. Okay, be a countable family of countable sets. Be a countable family of countable sets. So therefore this j must be a countable set. Then j is a countable set. So whenever j is a countable set, then by that theorem जो हमने पहले स्टेट की है, there is a bijection. And let's take this be a bijection. Let g from z plus to g be not a bijection, be a surjection. Okay, be a surjection because this j is a countable set, and in this family each set is countable, each n is countable. So also for all n belongs to j, an is a countable set. An is a countable set. So again we have a surjection. Again let's write here again for each n. So again for each n in j we have a surjection. For each n we have a surjection, say fn from z plus to a n. Is that clear, this surjection? Yes? Yes, sir. Okay. So we have this. Now we have two types of. One is the g that you have defined earlier, and second is this fn. So these are, how many surjections are these? Then as we have as the number of elements in g. Okay. तो जितने मेंबर्स j की होगी उतनी आपके पास surjections इस टाइप की होगी. So we need to show that. हमें प्रूव क्या करना है? We need, ये सब कुछ हमारा अभी तक गिवन है, गिवन इन्फॉर्मेशन है. ये g surjection है, fn this is given. अब प्रूव क्या हमें करना है? We need to show that union an where n belongs to j is a countable set. ये आपको प्रूव करना है. Is a countable set. So that means you have to define a map from z plus to this union, and that map should be a surjection. वो मैप क्या होनी चाहिए? वो आपको डिफाइन करनी है वो मैप. ये यहाँ तक तो गिवन था, ये सारे आपके पास ये सारी surjections गिवन है, but for this you have to define a map and you have to show that that map is a surjection map, is a surjection. So let's define this map. Define. हम z प्लस से यूनियन तक तो सर्जेक्शन डिफाइन नहीं करेंगे, हम डिफाइन करेंगे यहाँ से यहाँ. लुक एट दिस. वी डिफाइन अ मैप h फ्रॉम z प्लस क्रॉस z प्लस टू यूनियन n belongs to g. Because we know that this set is a countable set, तो z प्लस से लेकर इस सेट तक तो आपके पास सर्जेक्शन है ही, है ना? यहाँ से यहाँ तक है सर्जेक्शन आपके पास, बिकॉज z प्लस क्रॉस z प्लस इज अ काउंटेबल सेट. तो अगर आप यहाँ z प्लस क्रॉस z प्लस से लेकर इस यूनियन तक आप सर्जेक्शन अगर आप डिफाइन कर पाओगे, देन यू कंपोज दीज टू मैपिंग्स and the composition will be the surjection from z plus to the union, and from this we conclude that this union is a countable set. तो हम यहाँ से यहाँ तक मैप डिफाइन करेंगे, rather this z plus to the union. एक्चुअली हमें चाहे z plus to union, मगर वो डिफिकल्ट होगा, वो मुश्किल है डिफाइन करना. तो क्योंकि जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है ना, उसका हम यूज़ करेंगे. हमने प्रूव किया है कि z plus क्रॉस z plus is a countable set, तो इसका यूज़ हम करेंगे. So we use this, we just prove the existence of surjection from z plus cross z plus to the union a and n runs over g.
So let's define this by HKM. Okay, HKM is equal to, ये HKM आपने पेयर ली है, कोई पेयर आपने ली है। अब मेंबर इसका मिलना चाहिए हमें, आउटपुट शुड बी द मेंबर ऑफ द यूनियन। सो दिस इज लेट्स सी, किसी एन में होना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है, आउटपुट शुड बी इन सम एन। मगर हमें जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है, जे काउंटेबल है, एन का मतलब उन फंक्शंस का हमें यूज करना है। सो लुक एट दिस, आपको किसी एन में चाहिए, मतलब आप आउटपुट ऐसे लिखोगे दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एफ एन ऑफ सम एलिमेंट, क्योंकि वही एन में होगा। ओके, और साथ साथ में आपको ये भी करना है, जे का भी यूज आपको करना है। तो मैं तो लिखूंगा एफ ऑफ सम एलिमेंट, एफ ऑफ सम एलिमेंट, एफ ऑफ, आई विल राइट एफ ऑफ एम। मगर अब मुझे इसका जो सबस्क्रिप्ट है ना एफ का, क्योंकि एफ अगर देखोगे आप मैपिंग किस टाइप की, इट इज एफ एन। अब मुझे सबस्क्रिप्ट मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, व्हाट शुड आई राइट हियर so that I can use the previous information, the given information. So I use here, I use f का मैंने यूज किया है। अब मुझे सिर्फ किसका यूज करना है, g का, g का भी मैंने यूज नहीं किया। I will write here f g of k, f subscript g k of m. What's g k? G is a mapping from z plus to j. Okay, तो g k जो होगा वो जे में होगा, और वही तो एक्चुअली आपको चाहिए। अगर आप यहां पर देखोगे इसको, एफ एन, एन किसका मेंबर है, एन जे का मेंबर है। आपको ये समझ आ रहा है ये मैंने मैप कैसे डिफाइन किया है? इट्स वेल डिफाइंड बिकॉज इट इज एफ सबस्क्रिप्ट जी के, वेयर जी के इज अ मेंबर ऑफ जे, ऑफ एम वेयर एम इज अ मेंबर ऑफ जेड प्लस, बिकॉज एफ एन जो मैपिंग है वो दे आर द मैपिंग इज फ्रॉम जेड प्लस, there the mapping is from z plus to a. so output इसका जो होगा वो obviously या वो किस में होगा, जैसे अगर आप डिफाइन करोगे एफ एन कहाँ से कहाँ तक मैप है, z प्लस से लेकर ए एन तक। तो जब भी मैं आउटपुट की बात करूँगा एफ एन ऑफ एनी एलिमेंट से लेट्स टेक एल, ये किस में होगा, ये ए एन में होगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा इट इज इन ए, यस, ओके, ए ऑफ जी के, राइट, ए ऑफ जी के, ए जी के, ए सबस्क्रिप्ट जी के। So we prove this mapping is a surjection. This is a surjection. तो surjection के लिए आपको क्या करना है, आपको यूनियन में से कोई मेंबर लेना है, आपको प्रूव करना है कि you must have its preimage in z plus cross z plus under the map h. So let's take so this h is a surjection. This h is a, let's underline this, it's a surjection. So surjection, I must choose some element here. So let's choose x is in union a n, n belongs to j. This means that x belongs to a n for simple mathematics, मतलब उतनी हाई मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज नहीं हो रही। एक्स आपने यूनियन में लिया, सो इट इज इन सम ए एन फॉर सम एन बिलोंग्स टू जी। तो आपको एन मिल गया जी में। अब आपके पास क्या है, यू हैव दिस मैपिंग, नेक्स्ट पेज पर लिखूंगा एन जे में, इसका ख्याल रखिए, एन इज इन जी। लेट्स सी दिस, सिंस जी फ्रॉम z plus to j is a surjection. ये क्या है, it is a surjection. तो n आपने यहाँ से लिया, so there exists some element in z के, so therefore there exists some k in z plus
such that g of k is equal to, yes, this is equal to, say this is equal to what, j में आपने वो n लिया था, so this is surjection और n j का member है, g surjection है, so you can find k in z plus such that this holds. Again since this x which is in x किस में है, x is in an, which is now equal to a g of k, x इसमें है ना, x इसमें है, and f g k, f g n actually from z plus to a g k is a surjection. अब हम f g k का यूज करेंगे, is a surjection, या you can write f n from z plus to a n, is a surjection, so there exists some, say, m in z plus such that f gk of m is equal to x, right? So now let's now what's x? X is f gk of m, and by definition this is what, this is equal to, ये किसके बराबर है, it's h of km. Therefore for all x in union a and n belongs to j, there exists a pair km in z plus cross z plus such that h of km is equal to x, and hence h is a surjection, and hence this h is h, मैं यहाँ पर कोडोमेन और डोमेन भी मेंशन करूँगा इसका, h from z plus cross z plus to union a n belongs to j is a surjection. तो ये surjection आपको मिल गई. Also there is a surjection, say f g h, say let's write here f, आपने अभी तक यूज नहीं किया, f from say from z plus to z plus cross, because z plus cross z plus is a countable set. Okay, there is a surjection from z plus to z plus cross z plus, so therefore their composition h composition f from z plus to union a n belongs to j is a surjection, is a surjection, and hence this union is a countable set, and hence union a n belongs to j is a countable set, So countable union of countable sets is again a countable set, So next we have an exercise. Let's show that Q the set of rationals, is a countable set, is a countable set. Solution: we know that Q plus the set of positive rationals, the set of
positive rationals is a countable set. Okay, let q minus denotes the set of negative rationals, denotes the set of negative rationals. Okay, this denotes the set of negative rationals. Now we define a map. So define f from q plus to q minus by f of m by n is equal to minus m by n. Then f is a bijection. Then f is a bijection. So therefore q minus is also a countable set. Q minus is also a countable set. So hence q, which is equal to q plus union q minus union 0, is a countable set. Is a countable set by Abu theorem. Okay? By Abu theorem. Countable union of countable sets is a countable set. Okay, so next that is an assignment for you. The finite product is a theorem. Finite product, Cartesian product. Okay, finite product of only finite, not countable product. Okay, finite product of countable sets is countable. Is प्रूफ आपको खुद करना है. प्रूफ इज एन होम असाइनमेंट फॉर यू. तो आपको लेना है फाइनाइट. ओके, यू हैव टू टेक दीज से n. Suppose there are countable. Okay, you have to prove that this a1 cross a2 cross a, this is given. They are given countable sets, given countable. Okay, और आपको प्रूव करना है this is countable. ये आपको प्रूव करना है ये countable है. Prove this sets countable. तो ये काउंटेबल है. आपके पास सर्जेक्शंस है z प्लस से लेकर a1 तक, z प्लस से लेकर a तक. आपको फिर z प्लस से लेकर यहाँ तक सर्जेक्शन चाहिए कि a1 क्रॉस a2 क्रॉस a. ओके, द प्रूफ इज वेरी सिंपल. प्रूफ के लिए आप मनक्रीज जो मैंने पहले ही बताया आपको, तो ये सारा टॉपिक जो सेट थ्योरी का है ये हमने मनक्रीज से लिया है. तो यहाँ से आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो, या अगर आप खुद करना चाहोगे योर चॉइस. So we have seen that countable union of countable sets is a countable set. So that countable family may be an infinite family. Yeah? अगर आपके पास suppose आपके पास ये family है a1 a2 infinite family. In fact it's a countable family. a1 भी countable है, a2 भी, और ये family खुद countable family है because we can enumerate them. Its first set is a1, second is a2, third is a, so on and so forth. So it's a countable family of countable sets. Then we have seen that this union a n runs from 1 to infinity. तो यहाँ पर मैंने प्रिसाइजली वो जो j सेट है ना, इंडेक्स सेट, यहाँ पर मैंने ये दिया 1 2 this set. So we have seen that this is a countable set. But if I take the cross product infinite, okay, countably infinite, this may not be countable. This may not be countable. In fact, we will see that if A is a set consisting of only 2 points 0 and 1, then we can see that a cross countably infinite number of times. This set is not a countable set, and we'll denote this set by a omega. Okay, so a omega means the countable product of a with itself.
A cross A cross A, countable infinite product. Okay, so that's an exercise. Show that countable product of countable sets need not be countable. Show that countable product of countable sets, product of countable sets need not be countable. Okay, solution. Let's take x equal to the countable set consisting of only 2 points. Let x equal to this be a countable set. Be a countable set. Be a countable set. We show that x power omega, that means it's a product of x with itself an infinite number of times. It's a product of countably infinite it's a product of countably infinite many copies of x. Okay, x power omega. We show that this set is uncountable. हम प्रूव करेंगे ये जो सेट है ना, ये अनकाउंटेबल सेट है. दिस सेट इज एन अनकाउंटेबल सेट. So what's uncountable set? A set which is not countable is called an uncountable set. So we assume on contrary that this set is countable. Assume on contrary that x power omega is a countable set. Is a countable set. Okay. Okay. So then obviously there is a surjection. Then there is a surjection. Then there is a surjection. Okay, from z plus to x omega. Then there is a surjection g from z plus to x omega. Okay, so let's take सपोज जी ऑफ एन एलिमेंट होगा, इसकी इमेज एक्स ओमेगा में होगी. एक्स ओमेगा क्या है? जैसे एक्स पावर एन अगर होगा ना, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ एन कॉपीज ऑफ एक्स. उसमें क्या होगी? उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होगी एन टॉपल्स. क्या होगी? एन. अगर ना फाइनाइट, अगर सपोज 3 सेट्स का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉपीज ऑफ एक्स, देन द सेट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 3 टॉपल्स. इफ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉपीज, देन इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 टॉपल्स, और यू कैन सी द ऑर्डर्ड फिल्ड्स. तो यहाँ पर क्या है? इन्फिनाइट प्रोडक्ट. सो दैट मीन्स here we have a tuple, but that tuple is an infinite tuple. So what's that tuple? So g of n, इसकी कोई इमेज होगी ना यहाँ पर, वो obviously n पर डिपेंड होगी, वो मैं ऐसे डिनोट करूँगा x n1 x n2 so x nm. अब क्योंकि ये सिर्फ x n1 x n2 x, अगर मैं यहाँ पर ही खत्म करूँगा, देन इट विल बी एन m tuple, क्योंकि m तक मैंने लिया, बट इट इज एन इन्फिनाइट tuple, सो इट विल बी कंटिन्यूड लाइक दिस. तो सपोज ये इसकी इमेज होगी, n की इमेज, सपोज ये कोई इन्फिनाइट टपल है. सो दिस जी सर्जेक्शन. ओके, सो दैट मीन्स जो भी मेंबर आप यहाँ पर लोगे उसकी यहाँ पर इमेज होगी, और आपने नोटेशन कौन सी यूज की? n की इमेज सपोज ये है.
n की इमेज. So I will define an infinite tuple in x omega और मैं शो करूंगा उस infinite tuple की प्री इमेज नहीं होगी z प्लस में. ओके मैं एक ऐसा क्योंकि मुझे एक्चुअली प्रूव करना है कि x पर ओमेगा काउंटेबल नहीं है, तो मैंने अज्यूम किया कि ये काउंटेबल है, तो उसके लिए मुझे कंट्राडिक्शन बननी चाहिए. सो अगर ये काउंटेबल है देन आई मस्ट हैव अ सर्जेक्शन फ्रॉम z प्लस टू x पर ओमेगा. तो ये अगर सर्जेक्शन होगी देन every element must have pre-image, but I will construct an element in x power omega which does not have pre-image in z plus under this map G. So वो एलिमेंट में कैसे डिनोट करूंगा. अब ये जो मेंबर्स यहाँ पर है ना x1 x2 x कौन सा सेट है. x is a set consisting of two symbols, two letters 0 and 1. So where xij, ये जो भी एलिमेंट यहाँ पर है xij is either 0 or 1, is either 0 or 1. This element is either 0 or 1. Now we define an element in x power omega. We define an element y which is an infinite tuple y1 y2 so on and so forth in x power omega by. मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा. इसकी nth एंट्री किसके बराबर होगी yn. ओबियसली nth एंट्री या तो 0 होगी या 1 होगी. अब ये क्या होगी एंट्री. इट इज 0. इसका वैल्यू क्या होगा 0 अगर जो xnn जो है अगर वो 1 के बराबर हो, और ये 1 है अगर xnn 0 के बराबर होगा. So then obviously this y is in x power omega because it has only two entries 0 and 1. It's an infinite tuple with entries 0 or 1. But then there does not exist any k in z plus such that g of k is equal to y, which is this y1 y2. कोई k ऐसा होगा ही नहीं z प्लस में जिसकी जो इस एलिमेंट की प्री इमेज होगी. सपोज अगर ऐसा कोई k होगा, नो आई विल राइट इट लाइक दिस. मैं जो गिवन है ना मैं उसका यूज़ करूँगा. गिवन इन्फॉर्मेशन जो मैंने अज्यूम किया ना, एजम्पशन जो मेरी है उसका मैं यूज़ करूँगा, वहाँ से मैं कंट्राडिक्शन लाऊंगा. तो ये भी ठीक था जो मैंने यहाँ पर किया था. नाउ सिंस दिस g is a surjection, so there exists some k in z plus such that what's g of k? G of k is y. g of k किसके बराबर होगा y के बराबर होगा. So which means that what is g of k? So g of k अब y के बराबर है. By definition what is g of k? g of k is x k1 x k2. तो किसी kth प्लेस पर क्या होगा x k की, राइट. देन व्हाट विल बी x k k plus 1 and so on and so forth. It will be equal to this y. What is y? Y is y1 y2. इसकी जो kth एंट्री है वो क्या होगी, वो y k होगी, और इसके बाद होगी y k plus 1th एंट्री and so on and so forth. Now these two infinite tuples are equal. It means that x k k must be equal to y k. But by definition y k is 0 if x k k is 1, and y k is 1 if x k k is 0. So which is a contradiction. By the definition of y k, which is a contradiction. So thus g is not, thus directly you can say thus it's a contradiction. So thus x power omega is not a countable set. ये countable set नहीं है, and hence an uncountable set, and hence an
अनकाउंटेबल्स, ये अनकाउंटेबल सेट है. So this set is an uncountable set. So that means this set is uncountable. Okay, remark: the set 0 1, the set, this set 0 1 power omega is uncountable. Okay, this set is uncountable set. ये सेट अनकाउंटेबल है. सो आज हम इतना ही करेंगे इसमें. एनी क्वेश्चन? यस. Yes, do you have any question?